Welcome back, ladies and gentlemen, to the one and only JetSynthesys presents Global E-Cricket Premier League. मैं स्टेज पे नहीं हूँ, आपको दिख तो रहा है ना, ये स्टेज नहीं है, कास्टेड डेस्क है। कास्टेड डेस्क पे मैंने ऑलरेडी देखिए बहुत बार मेरा मन चाह रहा था कि मैं कास्टेड डेस्क पे आ जाऊँ, बट मैं अकेले आ नहीं सकता। नीरज ने मना कर दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना हम दो प्लेयर्स को लेके बैठ जाते। कास्टिंग हो नहीं रही थी क्रिप्स एंड फ्लोकी से, तो चलो इन दोनों को लेके आगे। मजाक कर रहे हैं, देखिए सीरियस लेने की बात बिल्कुल नहीं है। सो फॉर नाउ आई हैव ऑफ कोर्स मिलन फ्रॉम टीम मुंबई, जो कि बहुत दूर से यार लंदन से आए हैं वो खेलने के लिए सिर्फ इस टूर्नामेंट को। सो मिलन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड मेरे साथ सचिन भी है, बहुत टाइम से खेल रहे हैं ये बाय द वे गेम, बहुत पैसा जीत चुके हैं एंड बहुत इन्होंने घूमा भी है। एंड ये मुझे बता भी रहे थे कि और भी घूमने का प्लान वगैरह है, तो आपका भी स्वागत है। ही प्लेज फ्रॉम टीम कोलकाता बाय द वे। दोनों ही आप जो है एक दूसरे को कुछ कहना चाहेंगे स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम यू, कुछ भी? मैं कहना चाहूंगा, मैं सागर को जानता हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छा खेलते, जैसे ये टूर्नामेंट में जो क्वालिफायर्स हुए थे अच्छा खेले। सचिन है उनका नाम। सचिन, नाम ही याद नहीं है भाई। नाम याद नहीं, नाम याद नहीं है, वो फेंक रहा है। जानते हैं मुझे, वो फेंक रहा है। नहीं वो फेंक रहा है, मैं बता रहा हूँ। वो होता है ना, कैमरा के सामने थोड़ा नर्वस हो गया थोड़ी। अच्छा, थोड़ा कैमरा के सामने नर्वस है आप? हाँ, थोड़ा सा। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा, वो जानबूझ के बोला है भाई। नहीं, जानते। उनका नाम क्या है भाई? मिलन है पक्का? मिलन है, मिलिंद नहीं है ना? नहीं, मिला दे पक्का। वो लोग, वो ये सब लोग मुझे जानते हैं। अच्छा ये बात बताओ, आप जो लंदन से आए हो, अगर आप टूर्नामेंट जीत गए, ठीक है, तो कहाँ लेके जा रहे हो भाभी को? पहले तो लंदन तो जरूर लेके जाऊंगा। इसको नहीं लोगे? ये मेरे टीम में नहीं है ना। तो क्या हुआ? दोस्ती उसका भाई, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करते। देखो मेरा पासपोर्ट है नहीं है, बना अभी लूंगा कैसे लेके तो बना लेगा। 15 दिन लगता है भाई। मैं तो 10 तारीख, तो टूर्नामेंट खत्म हुआ 10 तारीख को निकल रहा हूँ मैं। ये क्यों जीतेंगे फाइनल? हाँ ये भी सही बोला ये क्यों बंदे ने। जीतेंगे? अरे क्योंकि यही देखो, तुमसे मैच तो नहीं जीता जा रहा है। नहीं, मैच तुमसे नहीं जीता जा रहा है। कितना हारे हो लगातार, सच बताओ? लगातार 2 ही हारे। 2 हारे। तुमने कितना हारा है? हम लगातार 2 ही हारे। चलो ठीक है, फिर तो सेम पेज पे है। पॉइंट्स भी सेम है। अभी बताओ, पॉइंट्स भी सेम है। आप लोगों का मैच जो है अगला नेक्स्ट मैच होगा, आई थिंक परसों होगा, राइट? नहीं, हमारा अभी सबसे लास्ट डे पे है। हाँ, डे 11 पे है। लास्ट तो डे। उससे मुलाकात होने से पहले यहाँ पर थोड़ा मुक्काबाजी हो जाए कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए हो जाए। भाई मर जाएगा वो, छोड़ दो प्लीज। ना हो जाए। नहीं, बातों की मुक्केबाजी बातों की मुक्केबाजी नहीं, गेम की मुक्केबाजी। देखो अभी हम खेलने नहीं वाले, ठीक है? अभी क्योंकि एक और मैच बचा है आज का, तो मैच पे ही चलते हैं, सीधा मैच देखेंगे। बट सीरियसली गाइस, आई वुड लव टू से कि ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। आप लोगों का एक ही और मैच बचा है फेस ऑफ करने के लिए, ठीक है? तो तब वहां पर स्टेज पे बुला के अलग से एक बार भारी पड़ चुके हैं इन पे। एक ही बार पड़े हो ना, दूसरा मैच इस बार भी पड़ेंगे ना। नहीं, दूसरा मैच कौन जीतेगा? वो कैसा था, टूर्नामेंट का पहला मैच था। थोड़ा नर्वसनेस था, हो गया। अभी इनका गेम पता चल गया है। शुरुआत में एक सेकंड, शुरुआत में उनसे आप हारे थे, राइट? हारे थे। उसके बाद 4 जीते हो। 4 जीते हैं। उसके बाद फिर 2 हारे हो। करेक्ट। और कैसा है ना, इनका अगर बैटिंग पहले की किसी ने भी 60 रन हो गया तो उनसे चेज नहीं होने वाला। देखो आज जो है ना, इनके कैप्टन ने बहुत बड़ा चढ़ा के बोला था कि भाई 70 रन बना लेंगे, ठीक है? 57 पे रोक दिया गया था। कोई प्लान है ऐसा? प्लान वही है, 60 कर दिया ना। हाँ। वो 60 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आपका भी ऐसा है, जो 4 विन किए वो पूरे टॉस जीत के 68 चेस किया हमने। 68 किया है। 77 हाईएस्ट रन है, वो मार सकते हैं। उन्होंने 70 का रखा है टारगेट। कुछ पेपर है, मैं साइन कर दूंगा। नहीं, अभी कोई साइन वाइन नहीं करेंगे। नहीं कर पाएंगे गाइस। देखा जाएगा, वो मैच में देखा जाएगा। बट सीरियसली गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड ऑफ कोर्स अभी हम चलेंगे डायरेक्टली मैच पे, लेकिन उससे पहले आवर एनालिस्ट आर रेडी, सो विल डायरेक्टली गो ओवर टू द एनालिस्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज बाकी है यार। मैं 3 तक काउंट करूंगा, ठीक है? 1 2 3, साथ में तीनों को बोलना है फाइंड योर ग्लोरी। करेक्ट? समझ में आ गया? चलो लेट्स डू इट ऑन माय काउंट। 1 2 3, फाइंड योर ग्लोरी। Analyst, over to you. There's so much of fun down in that GEPL. Milan and Sachin having that banter, and of course you see them fiercely competing against each other in that game. But then again, it's all for fun, isn't it? Oh, absolutely. The best part that I liked about it was when he said कि ये क्यों जीतेंगे tournament, मैं जीतूंगा tournament. So, you know, while camaraderie is there, there's also the spirit of competitiveness. And that's what the Global E-Cricket Premier League is all about. Welcome back. Then, of course, we have the next game up on the card. Sydney Panthers come back, of course, after that victory against Mumbai. A massive 5-wicket victory against Mumbai. And they're playing, of course, the likes of the Dubai Vipers, who did have a game early today, but come losing against the Chennai side.
Now, Dubai Vipers there, sitting pretty much on top. I mean, on the top at least. Yeah. They would need these points, or they would need this game in their hand before they end the day. Yeah, both sides need the points. I mean, Dubai, if they get the points, they'll finish at the top of the points table. Sydney, if they get the points, there are already 5 teams on 8 points. The points table will be even more bunched up closely, and they'll also move on 8 points. It's been a fabulous day of cricketing action. And yeah, I'm looking forward to this last game as well. There you saw the 4 games. We did see a couple of surprises, especially with that last one where Delhi, of course, won the toss and chose to bat and eventually winning that as well yeah, for the last game. Well, then more of the Reds in our favor. No problem. I think, well, Cripps just got that right. I think, well, I haven't word with Cripps as well. I think he's been doing a lot well with that analysis from that side. But, well, didn't get that right. We did think Chennai can keep that winning momentum going, but not really. But for now, of course, 3 of us call for Dubai. And of course, Chetan, you call for Sydney. Yeah, I mean, Dubai has been the kind of team that, gets tired. And also, in all likelihood, I think I've got 4 predictions wrong. Probably will get the 5th one wrong as well. Well, you hope you don't get that wrong. At least 1 green for the day. Well, is happy. Now, we look at, of course, Dubai Vipers taking on Sydney Panthers there. Sydney Panthers, remember, have won 2 and lost 2 in the last 4 encounters. They got that famous victory against the Mumbai. 5 wickets, massive victory, boosting their morale when they come down to this game. Yeah, they had a formula in that particular match. They made Mumbai bat first, restricted them to a low score, and then, went on and chased that down. So, yeah, I think they would want to, reproduce that formula. But just looking at the Dubai Vipers side, I mean, Ankit Roy, that's for me the player to watch out for. अभी तक उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है इस टूर्नामेंट में. उम्मीद यही रहेगी, he's the brute player. और brute player हम अपने viewers को बता दें, they have the power, they have the timing, they have the skill. It's just the margin of error is very, very small. And maybe Roy is suffering from a bit of pressure there. But Mukesh and Manish, brilliant players, absolutely brilliant players. All-round performance from them. And you know what? These 2 players have been carrying the team. But Sydney on the other end would be wary about these guys, Mukesh and Manish, who, if they can really build a partnership, make things really tough for their opponents. Pradyumna there will be certainly the man to watch, but Azan and also the likes of Chetan and JP there, crucial with the ball. Yeah, my namesake has picked up a few wickets in this tournament, 3 to be precise. Pradyumna has been heads and shoulders above rest of the batsmen. He's the one who's really, really carrying them. 130 plus runs in this tournament. The others are nowhere even close to 100. So again, he will have to do the bulwark once again. Akshu had a fine innings last match against Mumbai. I hope he continues that form. Also remember that we are coming down for all the reverse fixtures. We did see games, of course, these teams playing against each others. Now they start that second. Remember, we are playing, I mean, these teams are playing each other's twice in that contest in the 11 days that are going to witness eventually. And those are, of course, the players to watch out for. Without a doubt, Pradyumna for the Sydney Panthers. Manish there with almost 150 runs now in his kitty. Yeah, 150 runs and 132 runs. Superb batsmen, both of them. What separates the 2 of them is Manish has picked up 6 or 7 wickets in this tournament as well. He's an all-rounder, bringing both aspects of the game for his side. If somehow Sydney can keep Manish quiet with both bat or ball, they will surely win this game. Well, the onus certainly will be on these top players to make that difference when it comes down to going out there and either batting or bowling. But what we have also seen in this tournament in the last couple of days that we've seen is an all-round performance is what they need to turn the things around in their favor. If you've seen a one-sided affair, it's again been a lot to do with just a few individuals raking up. But at the end of the day, it's all a game, and in fact, rather a team game, isn't it? Well, yeah, it's been a team game. There's no doubt about it. The 48 best players in real cricket from India have, and overseas. I mean, we saw Milan talking about the fact he's come from London. So all over the world, 48 best players on real cricket have gathered here in the best 8 teams. So far, we are seeing a cracker of a tournament. There you are. Then we're ready for the toss for this final contest of the day of the GEPL. Let's go down to the host along with the captains and the umpires. All new Pulse of Mania's here. Maniacs wanted.
आगे कुछ भी हो सकता है। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के All flights to remain grounded. चारों गाड़ी जिद कर देगी। जो खुद की सुनते हैं दुनिया उनकी सुनती है। लेंस का आकड़ है, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। Thank you so much, Roshan and Chetan. And without any further ado, let me call on stage both of these teams. This is going to be the last match for the day and probably one of the most exciting matchups for today. Please come on stage. And ladies and gentlemen, please put your hands together for Dubai Vipers and Sydney Panthers. Competition, कोई नहीं मुकाबला from the bottom निकला टॉप डाला पैसा तो मुनाफा माँ पे गाली सीधा लाफा और रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे धाका मैं 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ धाबे पे स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स अब पूरा कामयाब मैं कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में हा 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 भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा पूरा गैंग है ग्राइमी हा टॉप 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 All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. लेंस कार्ड, डाउनलोड द ऐप। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। Now, they're all settled down. I also have something which someone has to do here. I've got a lot of information from the players. So I'll call on both the captains first, and then we'll have a little bit of chit-chat, then I'll call the umpire, right? So, of course, from this side, Mukesh, please come up. The captain of Dubai Vipers. And from this side, I would also love to call on stage the captain Akshu of Sydney Panthers. Akshu, I'll give you the mic first. Right, I'll call the umpire, but wait. Is it true that you make coffee for everyone back at the hotel? फ्रेंड्स उन सब के लिए बना देता हूँ। बस फ्रेंड्स के लिए। आज मैं आ रहा हूँ होटल, मुझे मिलेगा? नहीं तो मैं कप लेके आया हूँ। भाई ये हमारे लिए कॉफी बनाएगा दोनों के लिए, उसके बाद ही अंपायर को बुलाएंगे। डन रहता है? अभी नहीं पीना है? क्यों? क्या हो गया? अच्छा ओके, विल डू अ रीटेक ऑफ दिस। ठीक है, आपका आवाज पहले नहीं आया था। जस्ट फ्रॉम द कॉफी पार्ट ओनली, नेचुरल रखना था भाई। चलो ठीक है। तो अक्षु, मैं एक चीज लेके आया हूँ। 2 कप्स है, एक उसके लिए एक मेरे लिए, प्लीज। आपको पता है कि रात को आप, मुझे पता है, ये पता चला है आपके ये जो टीममेट्स हैं ना, उन्होंने ही बताया है कि आप कॉफी बनाते हैं रात को सबके लिए। तो आज मेरे लिए, उसके लिए। मेरा गला खराब हो रहा है यार, प्लीज। मैं जीतेंगे तो बनाएंगे फिर आपके लिए भी। पक्का? पक्का पक्का, ठीक है। मैं इसको साइड में रखता हूँ। लेट मी कॉल ऑन द अंपायर ऑन स्टेज फॉर दिस अमेजिंग मैचअप टॉस। कॉल कौन करेगा गाइस? हु इज गोना कॉल? मुकेश? अक्षु? भाईचारा तो देखो यार, दोस्ती तो मतलब ऐसे निकल रही है। अंपायर प्लीज कम अप ऑन स्टेज फॉर द टॉस। ये अंधे अंपायर्स, बट कोई बात नहीं। अंपायर इज हियर। सो अंपायर सर, आर यू रेडी फॉर द टॉस? हु इज कॉलिंग? यू आर कॉलिंग? ऑलराइट, मुकेश इज कॉलिंग। लेट्स गो फॉरवर्ड विद इट। Heads. And oh my God, it is heads. Dubai Vipers. What do you choose? Bowling ले लो यार। We will bowl हाँ first. पता है। जाओ तुम बैठ जाओ। नहीं यार, don't go like this. ठीक है, सबसे पहले ये बताओ मुकेश, बॉलिंग का जो हम रीसेंट मेटा देख रहे हैं, ये चलता रहेगा पूरा ऐसे ही? Hope so. Hope so. अगर नहीं हुआ तो कंटिजेंसी प्लान क्या है? नहीं, अपन सोचे चेंज करेंगे एंड में। वेल, दुबई वाइपर्स का एक बहुत अच्छा स्ट्रीक चल रहा है। हम देख रहे हैं कि दुबई जो भी मैचेस खेल रही है, ऑलमोस्ट अगर जीत नहीं रही है तो वो क्लोज कर जा रहे हैं। कैन वी एक्सपेक्ट मोर बेटर गेम्स कमिंग इन द नेक्स्ट 5 days? लास्ट में अपने से गलती हुआ थोड़ा बहुत, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे इस मैच में, और वो बेटर होता जाएगा। एनी मैसेज यू हैव फॉर योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस बैक एट होम? सपोर्ट अस, सपोर्ट दुबई वापस। जरूर जरूर, सब सपोर्ट करेंगे। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गाय। कम ऑन मैन। एंड उसके साथ अक्षु, कल आप ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच थे एक मैच के लिए, राइट? आपका जो मैच था, आज भी बन सकते हो आप। यू डिड मेंशन कि आपके टीममेट्स का बहुत सपोर्ट था उसके लिए, बट आज भी बनने के चांसेस है मैन ऑफ द मैच?
कोशिश करेंगे सर, कोशिश रहेगी अपनी तरफ से पूरा मैच जिताने की ट्राई करेंगे। जरूर जरूर। Well, I'll not hold you guys any longer. Please shake hands and head over to your dugouts for this amazing game. This is going to be the last game for today. That is day number 6. And कल से एक महासंग्राम जरूर चालू होगा, but उससे पहले, इस मैच से पहले, analysts are waiting. So Roshan and Chetar boys, please take it away. Thank you, Captain Price. Well, the news from the center being that Dubai have won the toss and chose to bowl, an absolute no-brainer. There've just been one team who have taken that risk, but the others still not willing to take. It is the 27th time in 30 matches in 6 days that a side has won the toss and chosen to bowl first. There are no surprises here. Absolutely no surprises. Well, we'll see one surprise if it ends up in favor of either of these teams, of course, as the points table is going to keep on moving. Let's go to our casters, then Sam and Cripps who are ready for the game. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. लेंसकार्ट, डाउनलोड द ऐप। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों और मेरे सारे दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है GEPL में। मेरा नाम है क्रिप्स, मेरे साथ है सैम एंड वी आर रेडी फॉर द 5th गेम ऑफ द डे। वाओ, इट्स बीन अ लॉन्ग डे। काफी सारी नई नई चीजें देखी हैं हमने, and to stop things off, or rather to end the things on a high note, we have Sydney Panthers taking on the Dubai Vipers. अभी के लिए अगर बात करेंगे क्रिप्स, सिडनी पैंथर्स हैव बीन टुवर्ड्स दैट विक्ट्री स्ट्राइड, जहां पे दुबई वाइपर्स कल के दिन में डे 5 के अंत में दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द टॉप, बट आई थिंक अभी बहुत जो है मामला चेंज होते हुए नजर आ रहा है। नाउ दुबई लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम टुडे टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ, एंड जस्ट लाइक चेन्नई, राइट, दे आल्सो लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम ऑन डे 5, बट इन द एंड गेम they won that victory and broke that losing streak. But Dubai Vipers क्या वो कर सकते हैं? टॉस जरूर जीत चुके हैं. Can they win the game also? Exactly. I mean, usually whenever teams win the toss and choose to bowl, as our analyst pointed out, they mostly win. Yeah. So technically Dubai should have this in the bag. Yes. Technically. But हमने देखा है बहुत theory, in practice बहुत अलग-अलग चीजें होती है. Yeah, I think अभी के लिए still in terms of all the stats that we've written down in paper, वो हमें अभी के लिए बताता है very fewer games जहाँ पे defending score को जीत के दिखाया है. Exactly. Does it happen here again is something that we have to wait and watch for. Sydney Panthers यहाँ पे जरूर प्रद्युम्न as well as सौरभ के साथ शुरुआत करते हुए and हरभजन on the other end. Dubai Vipers पिछली बार हम बात कर रहे थे had to put हरभजन in because बहुत ज़्यादा wickets खोते हुए नजर आए. But let's see right now, can हरभजन find that opening as a wicket? Good length, घुमाया गया, जाएगा सीधा तेजी से बाउंड्री की तरफ, and that's going to be a brilliant four to start things off. Pradyumna is the hard hitter for Sydney Panthers. एक ट्रेंड है, जब भी प्रद्युम्न विकेट पे आते हैं और वो अगर वो स्टार्टिंग के 4 बॉल सर्वाइव कर जाते हैं तो वो हमेशा 25 रन के ऊपर ही स्कोर करते हैं. लेकिन that is if he survives the first 4 balls. Yeah, अब उन्होंने पहले ही बॉल पे चौका मार दिया है, इसका मतलब हरभजन थोड़े और गुस्सा हो जाएंगे, थोड़े और जोश से डालेंगे, थोड़े और जिगर से डालेंगे. Again, but इस बार it went a little back point, जिसके वजह से जरूर फील्डर रोक देंगे. No 4 coming through, however a double. तो 6 रन जरूर 2 गेंदों में उन्होंने बना लिया है. हरभजन he for sure wants to find the wicket. उन्होंने start around किया, उसके बाद over, अभी यही चलता हुआ नजर आ रहा है. This time a shot to good line delivery, but fielder आ जाएंगे I think because बॉल में रफ्तार नहीं है. However, a little bit of a misfield, तो तीसरा रन बनाने के लिए एक गैप यहाँ पे खुलता हुआ नजर आएगा. चाहे चौथा भी बना सकते हैं उतने में, अगर रिस्क लेने की आवश्यकता है सिडनी पैंथर्स में तो. Yep, सिर्फ 3 runs, so not a 4 coming in. They save 1 run. Still good attempt by हरभजन. सौरभ आ चुके हैं स्ट्राइक पे, facing him for the first time. And Saurabh usually is a very balanced batsman, even though the category वो नहीं है. No, the first wicket. आप जैसे उनका जिक्र ही कर रहे थे, a mistake comes through, the balanced batsman goes out. And that's the weird part. Saurabh doesn't usually play risky shots like these.
वो स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट पुश एंड स्ट्रोक पे ही खेलते, लेकिन इस बार उन्होंने लॉफ्ट किया, वो भी किधर, टुवर्ड्स फाइन लेग, सीधा उनके पीछे। स्पिनर के सामने स्पेशली इन पावर प्ले इज गोइंग टू बी टफ। बॉल में रफ्तार नहीं मिलता है, अगर आपने कनेक्शन सही तरीके से नहीं बैठाया तो वो जाएगा भी नहीं। कमिंग इन विद द लास्ट 2 डिलीवरीज, यहाँ पे 5th वन, इट वाज अ फेयरली शॉट टू गुड डिलीवरी एंड यहाँ पे देखिए पुश शॉट खेल के अक्षु नॉट रिस्किंग इट, क्योंकि अभी वो फील्ड पे उतरे, जस्ट लाइक हिज टीममेट, उनको इतना जल्दी वापस नहीं जाना है। Exactly. Tito went off in the first ball itself, and that was disastrous. Akshu looking to survive for longer, has to dig deep over here. Oh, and I think he's done enough. 2 runs exchanged, strike retained. Decent pace for the side of the Sydney Panthers. 12 for 1 loss at the end of the first over. So the run rate is downright average. But the fact that they lost a wicket is concerning, to say the least. At least they didn't lose Pradyumna. Like I said, if Pradyumna survives the first 4 balls, generally वो 25 रन तक बना ही लेते हैं। ये है उनका चौथा बॉल, which I mean, whenever he comes on strike next, he will be facing the 4th ball. But for now, here's Vijay to throw it. Nice one, nice bowling coming through. सिर्फ एक बनाने के लिए मौका मिलेगा and 30 यार्ड्स के अंदर ही रोक के दिखा देंगे। Good stuff coming in here from Dubai Vipers, keeping everything very precise and sharp, not letting anything kind of fail off or kind of go for a misfield. अभी के लिए जरूर 13 रन नजर आ रहा है, but as you said, it is now Pradyumna back on strike. Very crucial to find, but it only finds his body. Nice inline bowling right on the body. Yeah, and it even spun on the offside just to throw him off a little. Pradyumna tried to attempt a simple push shot towards the front, but he mistimed it. At least there's no consequences to it. But runs. Finally, जैसे runs का नाम लिया यहाँ पे, घुमा के मार दिया सीधा deep point पे. A big 6 coming through. एक बेहतरीन छक्का लगाते हुए प्रद्युम्ना. Finally that pressure which was there, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर देंगे, जो पहले पावर प्ले में ज्यादा नहीं निकला, अभी सेकंड पावर प्ले में जरूर कुछ कमाल करना चाहते हैं, बट आखिरी 2 डिलीवरीज बचेंगे। And you can see it is going to be a full length ball coming through. इसका भी लगेगा, but तैयार थे. He tried, but it was an edge, and therefore a catch and a wicket down. The brute is gone. नजर घटी, दुर्घटना भी घटी, और ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी यार। ये उनका ब्रूट बैट्समैन था प्रद्युम्ना। मैं तो कहा था अगर वो 4 बॉल सर्वाइव कर जाते हैं तो जनरली 25 के ऊपर मार जाते हैं, लेकिन इस बार तो वो 15 में ही आउट हो गए, defying his own trend. Unfortunate for him. And अब देखिए पूरा पिच में नए खिलाड़ी, नए बल्लेबाज आ चुके हैं, meaning they need time to get familiar with the pitch. Push shots ही हमें ज़्यादातर देखने के लिए मौका मिलेगा, and you can see somehow they do make runs in between the wickets because that's all they can afford as of now. एक और डबल मार के यहाँ पे जरूर अक्षु 6 रन पे आ जाएंगे on just 4 deliveries. आखिरी डिलीवरी इस पावर प्ले को खत्म करने के लिए, मतलब स्पिनर्स का काम खत्म, पेसर्स आते हुए नजर आएंगे, बट कैन इट कुड बी अ बिग विक्ट्री। स्ट्राइक की तरफ जी हां मारेंगे, और नाइस शॉट एंड गेट्स इट एज अ क्लोजर बाउंड्री। पावर प्ले को खत्म करने के लिए मच नीडेड फॉर द पैंथर्स। 25 for 2 loss at the end of the second over. I would say अगर ये wickets इतने ज़्यादा नहीं गिरते ना, this would have been a decent amount of runs. Usually you score 30 in the first 2 overs if you are a damn good batting side, but 25 भी चल जाता है। हाँ, but 2 wickets down, especially one of them being your brute, and it's not just any brute, right? It's the brute that always survives towards the end. Pradyumna usually opening करने उतरते हैं, लेकिन 3 या 4 down तक भी टिके रहते हैं, तो ये वैसे टाइप के बैट्समैन है। Now that he's gone, अक्षु और आजान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। Yes. And उनके सामने कौन आ गए? वामजी। वामजी can be damn difficult to predict. दोनों रैडिकल प्लेयर्स अभी के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे, फील्डिंग सेटअप खुल चुका है, जिसके वजह से मौका मिला गैप के थ्रू अजान अपने बाउंड्री ढूंढते हुए रन्स इनिशियली स्कोर करने में, एंड इट इज गोइंग टू बी अ पल्सर NS 125-4. Look at that guy. He lifted a leg in the air with the grace of a ballerina and peacefully swings that bat, just lofts it, and that's a lateral loft, you know, so it just goes all the way towards cover. Oh, लेकिन because of that shot, इस बार वामसी ने फील्ड एडजस्ट की है थोड़ी। उनका जो पॉइंट वाला फील्डर है, उनको थोड़ा और नीचे ला दिया गया है just to cover the square, and there is one more
fielder in the same area inside the 30-yard circle. But the moment I speak about that, that particular player has been turned into a slip. कवर से सीधा शॉट थर्ड मैन की तरफ यहाँ पे तैनात कर दिया गया. Let's see how it works out as of now. Run up लेते हुए, looking forward to the second delivery. Again finding that gap. जैसे प्लेयर को वहाँ कवर से 30 yards के अंदर हटा दिया उन्होंने, वहाँ से मार के रन्स बनाते हुए नजर आएंगे अजान as well as अक्षु. I think तीसरा बना के यहाँ पे जरूर खुश रहेंगे. And Panthers comfortably striding their way at least in this third over. थोड़ा रन्स बना के अपना रन रेट भी बढ़ाते हुए, which is pushed to 13. 13 is a good enough run rate for now. Push करते करते अगर ये रन रेट 15 तक पहुंच गया, then Sydney Panthers have a solid innings on their hand. Dubai on the other hand just need one more wicket. उसके बाद जो बाकी बैट्समैन बचेंगे बैलेंस एंड डिफेंसिव वाले, वो इतना रन बनाने की क्षमता नहीं रखते. उनको इनमें से कोई एक रैडिकल प्लेयर को आउट करना है. Player had to come all the way from deep cover to put a stop to that ball. Double जरूर लेते हुए नजर आएंगे. उसके वजह से there's still a lot more left in this third over. वंशी रोकना चाहते हैं बट मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि अक्षु और अजान ऐसे बहुत शातिर तरीके से खेल रहे हैं. They're finding those gaps, making sure at least it pushes to 30 yards. A possibility of an edge and immediate catch. बाल बचे यहाँ पे अक्षु. Yep, Vamsi definitely will be hitting himself in that one. Good ball. He even baited Akshu into trying that mid-wicket drive. Or, I mean, considering he's left-handed, cover drive for him. But this time they play it safe. Good old point की side में मारा है उन्होंने. Deep point वाले player ने ये ball intercept किया. Slip की position change कर दी गई है because the batsman का hand भी change हुआ है. Last delivery of the third over coming through. Short one, घुमा के मारा है यहाँ पे. It's going to go to the back square leg, but it's not going to be enough to find a boundary. Player deep में तैनात, रोक के दिखा देंगे. Pushing the score to 37. Oh, it was a single. Double भी लेने के लिए मौका नहीं दिया उस fielder ने. 37 at the end of the third over with 2 wickets as a loss. And coming in right now, Manish and Mukesh. इन दोनों का जब भी हम नाम लेते हैं सीधा दुबई वाइपर्स का ही नाम आ जाता है एंड इनका जुगलबंदी चलता है. लेट्स सी व्हाट मैजिक मनीष कैन डू राइट एज ऑफ नाउ. Manish and Mukesh, जैसा आपने साथ में कहा, they have basically been the face of the Dubai Vipers team. Most of the times they are the one who carry this team to victory, and Manish has to bring that performance yet again, but he gets sent packing in the first ball itself. What a way to start for Manish. Up in the air. And a very risky straight drive attempted by Akshu. दोनों फील्ड पे बैठे तैयार हैं एंड दोनों का कम्युनिकेशन के साथ विकेट निकालते हुए. व्हाट अ ओपनिंग एज हिज ओवर स्टार्ट्स. पहली डिलीवरी में विकेट लेते हुए मनीष. नाउ एज द थर्ड विकेट फॉल्स, ट्रबल स्टार्ट्स ब्रूइंग. स्टेप आउट करके खेलने का इरादा फेल होता है अजान का, meaning that's going to be a dot immediately after a wicket. मतलब मामला ऑलरेडी थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है. टेंशन राइट नाउ ऑन द साइड ऑफ द सिडनी पैंथर्स pavilion, dugout, everything. Sent flying. There will be a bounce before the catch. तो एक और विकेट तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सिडनी पैंथर्स बहुत ही संभाल के खेल रहे हैं. उनको अभी एक बहुत ही क्लियर कैप दिख रहा है towards mid wicket and square leg. And on the other side of things, point and cover के बीच में. लेकिन उनको अगर बॉल अगर बाउंड्री मारना है तो बहुत तेज मारना पड़ेगा. If it just goes across the ground at a measly pace, it will be very easily intercepted. This was a fast delivery, however, unable to play it. Place a push shot. Make sure कि runs बनाते रहे, running between the wickets. कि मनीष जिस हिसाब से अपने pitching change कर रहे हैं and finding those traps. Just now we saw it was such a crucial wicket जैसे अक्षु का निकाला है उन्होंने. अगर वो नहीं निकलते, maybe there could have been a chance that अक्षु दोबारा कहीं ना कहीं बाउंड्री ढूंढते. Fielder position change. There's one more player very close to the offside, and this is exactly why. Oh no, they have to continue running or maybe go for a cancel. Potential Very for a close. run. Bounce का warning, but umpire क्या विकेट देंगे? The other umpire will. Yes, he does. Raises his hand and signals a out. Down to the last wicket, Crips. And that was a very good adjustment in the terms of fielding. उनने एक प्लेयर को बहुत ही क्लोज मिड विकेट पे खड़ा किया था. उनको पता था कि इनके ऊपर अगर ऐसे डिलीवरी डालेंगे तो ऐसे ही शॉट खेलेंगे. And immediately got that fielding setup up. Exactly. And I think by the time वो realize करते,
ऑलरेडी वो शॉट लिया जा चुका था. इस बार भी लेंगे बट इट्स गोइंग टू बी फेयरली अ ग्राउंडेड वन एंड मौका भी मिलेगा. देयर वाज नॉट मच स्पीड ऑन द बॉल. एक रन जरूर बनाते हुए विल एंड द ओवर. Exactly. 41 runs at the loss of 4 wickets. Like look what happened. इस बार भी ये वाला बॉल वही फील्डर ने पकड़ा जो पिछले बार पकड़े थे. Yes. The only difference is this time they continued running. Last time जैसे ही वो फील्डर ने बॉल पकड़ा ना, वो दोनों रुक गए बीचों बीच. Yes. So I don't know if they continued running after that or cancelled it, but that was definitely a big mistake. That indecision cost them the entire wicket. अभी भी मौका ढूंढ रहे to push it towards the 50 mark. 50 is always a decent score जहाँ पे हम GPL में देख रहे हैं. And today's entire day has just been 60s except for जो हमने पिछला गेम देखा जो जाके 64 पे रुका. And that also score was really well held coming in. But क्या यहाँ पे मौका मिल सकता है? Panthers for sure they need the 50 वरना तो दुबई वाइपर्स के लिए आसान हो सकता है. Again they will be kind of looking forward to sticking Roy. हम बात कर रहे थे बैलेंस जितना crucial होता है. Roy is going to be a crucial player in the batting end of things in the second innings. बट अभी भी ये इनिंग्स खत्म होने का हम इंतजार कर रहे हैं. बट अभी के लिए रन्स का अगर बात करेंगे इट्स जस्ट बीन फेयरली जस्ट रन्स बिटवीन द विकेट, सिंगल्स एंड डबल्स. तीसरा डिलीवरी यहाँ पे आता हुआ अजान अभी तक टिके रहे. ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट. दिस टाइम ही प्लेस टुवर्ड्स द कवर. वन बाउंस, अ कपल मोर एंड येट स्टिल गेट्स ओनली अ डबल. Yeah, and that's what happens when your balanced batsmen are on the pitch. यहाँ पे आपको full length ball आई है. Almost a full toss है जो बैट पे direct impact खाया without even bouncing on the pitch. और वैसे बॉल्स में यूजुअली अगर कोई दूसरा बैट्समैन होता ब्रूट या रैडिकल वो छक्का मार देता है लेकिन अजान नहीं मार पाए. मिस द टाइमिंग हियर अजान. हाउएवर बाउंस का वार्निंग ये थोड़ा खुशी दे सकता है अगर एक और बाउंसर आता है. बट आई थिंक इन जीपीएल सो फार वी हैव नॉट सीन अ डबल सेकंड बाउंसर कमिंग थ्रू फॉर अ नो बॉल. एक नो बॉल जरूर हमने देखा था और मे बी इवन 2 एट मैक्स. बट प्लेयर्स आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव एंड कंजर्वेटिव एज वेल एज वेरी कॉशियस. अभी वेरी कॉशियसली खेला. गैप में एक बेहतरीन शॉट लेते हुए तेजी से फायदा लिया उस स्पीड का एंड एक चौका में कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे अजान. बट इट्स डाउन टू द लास्ट बॉल ऑफ दिस फर्स्ट इनिंग्स. Yep. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app now. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. You can surely get those boundaries, the powerful pulsar boundaries in a full toss, but is it too little too late? I guess we'll find out after this one. This too goes in the air, but there's always somebody to catch it. They have to make that second run. Even if it's an out, it was worth the risk. They had nothing to lose at this point, and it will most likely be an out. Yes, it was clearly an out. 2 रन भागने के लिए गए, दुर्घटना वहां पे घटा. नजर हटी, दुर्घटना घटी. Lenskart wicket coming through. And that's an all out that with Dubai Vipers are able to pull off. देखिए हमारे बाकी सारे टीम्स के प्लेयर्स भी supporting, they're very happy to see a lot more. Personally भी मैं इन सबसे बात किया and everybody is like ये format हमें बहुत ज़्यादा मजा दे रहा है because we cannot expect one single thing happening because individually हर एक प्लेयर अपने opponent को respect करते हैं but जो होता है that's just unfortunate. It is unfortunate, right? What's more unfortunate is that these guys they actually lost 2 wickets to a run out. अब तक हमने बहुत सारे clean bowls देखे हैं, बहुत सारे duck outs देखे हैं, बहुत सारे catch outs देखे हैं, but we haven't really seen a lot of run outs. Yeah. So if you have 2 wickets which you lost because of a run out in the same innings, it's a massive problem, man. It's a red flag for the side of Sydney Panthers. Ryan Manish again starting it in this second innings, and जैसे मैं बोल रहा था, crucial again. Roy is going to be on the striking end. Yorker length delivery इस पे सिर्फ एक grounded push shot खेलेंगे, double बनाने के लिए मौका मिल सकता है, but it looked like he did not force that double. Will fairly just be okay with a single. Start करने के लिए risk क्यों लेना है जब मौका और मिल सकता है चौका मारने के लिए, and लेके आएंगे मनीष को strike पे. Manish, powerful bowler, has to prove his mettle as a batsman yet though.
rather safe one. Flick towards the square leg side. No big deal. Chetan keeping them humble. 2 runs for 2 balls. Looks like चेतन के सामने यहाँ पे उनको कुछ अलग करके नहीं दिखाना है. They're trying to play it as safe and as easy as possible. But इस बार मौका मिला. Roy will send it off to the boundaries. एक चौका लगाते हुए, and you can see immediately Manish patting his back, telling him good one, nice shot, nice find. क्योंकि देखिए बहुत नजदीक से गया फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ जो खिलाड़ी थे उनके पास ही से गुजरते हुए नजर चला गया. Unfortunately, the player was too deep towards back square leg, and वो रोक नहीं पाए, आ नहीं पाए सही टाइम पे. So that's going to be the first boundary here in this second innings. But even after that boundary, there's not much adjustments in terms of the fielding. जो backside के 2 fielders है, close third man and fine leg पे, बस उनको move किया जाएगा. A lot more defense towards the offside within the 30-yard circle, लेकिन towards leg side जो बाकी 2 fielders है outside the 30-yard circle, वो दोनों को boundary के close रखा गया है. And even after all those adjustments, even after all that effort, they cannot stop the 4. Or rather, it was a 6. एक बेहतरीन छक्का लगाते हुए, a nice gap found right between the deep back square leg as well as deep square leg. बेहतरीन तरीके से मार के दिखाया अभी के लिए. And it looks like now Panthers are again back on trouble. Runs जो उन्होंने बनाया इतना बढ़िया नहीं है. उसके साथ अभी स्कोर इतना डिफेंड करना है जो हमने जनरली 50s में होता हुआ नहीं देखा है. Easily teams do chase it down and make it happen. And Roy already 12 runs बना चुके हैं 4 ही गेंदों में, on an average right now 3 runs per ball. Oh no, this can be a big one. Manish को यहाँ पे भेज दिया गया. Roy was the one making scores, but Manish sidelines पे अभी तक थे, and वो जैसे आए गए सीधा dugout. Unfortunate scenes for him here, but still, I would say that was a worth it over for the side of Manish. जिस तरह से वो usually खेलते हैं, it really tells you how much risk he's willing to take. And even after so many fielding adjustments, he went for the same shot again and again and again. Yeah. Bound to be punished at one point. Second power play over. Next stump के तरफ फेंका गया. However, oh wait, not the way you want to start your over, but still could have been waivers. Could have been a no ball, and then JP को धोया जाता. Mukesh on strike, ready to face his second ball, but technically it's the first one doesn't count. Oh, well intercepted by the fielder. सिर्फ एक ही रन मिलेगा. मैं अभी के लिए इंतजार कर रहा हूँ सौरभ जब आएंगे, because he's been the one who has majority of the wickets to the side of Panthers. उसी के साथ having the lowest economy, meaning he is going to not give a lot of runs. but अभी के लिए good ball coming through, right, edging towards the pad जाएगा, dot में convert होता हुआ. Playing it really well so far, JP. Imagine if that was mistimed and ball back के edge को लग के फिर भी stumps पे लगता. Patch पे भी लगता तो there could have been a chances of an LBW, a risky one, however. But इस बार miss नहीं करेंगे. Similar position, but fielder तैनात. He so could close. go and become a Superman over there. Superhero नहीं बन पाए तो superhero बनाएंगे. Roy with another 6. Amazing stuff by Roy. He couldn't accomplish much in the previous game, लेकिन इस बार वो तहलका मचा रहे हैं. इतना तहलका मचा रहे हैं कि even Mumbai Grizzlies are entertained by this. रोक नहीं पा रहा है कोई भी. And immediately Roy says, अरे बहुत हो गया, गैप में खेलते हैं थोड़ा, and pushes it brilliantly towards the cover. But रफ्तार नहीं है उस गेंद में, therefore it does eventually get stopped. However, runs बनाने के लिए भाग के तो बहुत ज़्यादा मौका मिला रॉय को. Definitely. रॉय ने यहाँ पे 3 runs बस भाग के बना लिए हैं. And JP, he's not happy with whatever's happening so far. इसलिए this time he will change his stance. Changing fielding positions as well, most likely. फिलहाल जो भी fielding set है, it has both those players outside the 30-yard circle towards point and square leg, but required run rate 8 का है, but over में already 11 जड़ चुके हैं. पिछले ओवर में 13 हो चुका था. That's something that they have to look forward to. Power play में already अगर required run rate से ज़्यादा ले रहे हैं ना, trouble. But अभी के लिए what an overthrow, an extra run लेते हुए. मुकेश nice decision making.
second kill लगा wait, and then he recovers thankfully. Yeah. But still it's so risky, right? If you overthrow and you still continue running. हमने पहले भी एक बार ऐसा एक रन आउट देखा है जहाँ पे एक ओवरथ्रो हुआ था, मिसफील्ड हुआ था, and someone tried to capitalize on it to punish that mistake, but they ended up getting run out instead. Yep. ये ग्रीड के चक्कर में बहुत सारी गलती चीजें हो सकती है. आखिरी डिलीवरी शॉट वन कमिंग थ्रू बट प्लेयर तैनात पॉइंट की तरफ रोक के दिखा देंगे. सो ओनली अ सिंगल टू एंड इट. 27 फॉर द लॉस ऑफ वन एट द एंड ऑफ द सेकंड ओवर एंड पावर प्ले यहीं पे खत्म होते हुए नजर आएगा. एंड फील्डिंग अब ओपन जरूर होगा बट साथ ही में पेसेस भी आ जाएंगे तो ट्रैप्स वो उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा अभी के लिए. Here comes Saurabh. He's the guy you wanted to see, right? Yes. Highest wickets so far in his team as well as having the lowest economy. क्या इस बार भी वो एक ऐसे कमाल करके दिखा सकते हैं? Because as you can see 25 runs needed in just 18 deliveries which is doable. The difference is just 5 runs. 5. But right as now as we say Saurabh immediately ends up eating a 4 and that economy right now going down the drain. Down the drain. Down the belly of the beast. अरे दर्शक तो एंजॉय कर रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पे अगर दुबई जीत जाती है then again everything opens up for everybody. Exactly right. There was a point where Dubai was on the top of the table. अब वो गिर के नीचे आ चुके हैं. उनके बीच में, कोलकाता के बीच में और मुंबई के बीच में बहुत सारे लीडरशिप पॉइंट्स एक्सचेंज हुए हैं, बहुत सारे पोजीशंस ऊपर नीचे हुए हैं. But this is just the first round of all the games ending for the teams. At this point, हर एक टीम सबको एटलीस्ट एक बार खेल चुकी है. Some teams have played more matches than the others. Yeah. But everyone has faced everyone at least once. Yes. दोबारा एक और शॉट मुकेश खेलते हुए. मुकेश अभी के लिए हम जैसे बात कर रहे थे रॉय जनरली इवन दो ही इज द ब्रूट एक जोड़ बनते हुए नजर आते हैं टीम का. जैसे रॉय चले जाते हैं ऐसे लग जाता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है अगेन बिकॉज ही इज अ ब्रूट. बट अब मुकेश वो एक जैसे हम बात करते हैं ना सिनर्जी बिल्ड करने में एज एन पार्टनरशिप बिल्ड करने में यहाँ पे काम आ रहा है रॉय को एंड रॉय उसका फायदा जरूर उठा रहा है. मुकेश ऑन दिस डिलीवरी इज अनएबल टू प्ले. हाउएवर बाउंस का वार्निंग जरूर मिलेगा. Therefore nothing much to be worried about. डॉट कन्वर्ट हुआ था बट बाउंस के साथ मीनिंग अगर एक और गलती ऐसे हुआ there's chances of no ball. रॉय अभी के लिए 21 runs at just 7 deliveries. अभी घुमा के पीछे की तरफ मारा है. फील्डर देखते रह जाएंगे एंड दर्शक जोर से ताली बजाएंगे क्योंकि एक बेहतरीन छक्का लगता है. A powerful one. Pulsar and it's 125. फील्डर बन गए ऑडियंस बन गए फील्डर्स. रोल एक्सचेंज होते हुए यहाँ पे लेकिन रन रेट बरकरार रहेगा. एक्चुअली रन रेट तो और भी ज्यादा बढ़ गया. 13 in 13 balls. Come on now, this is very easy. One bounce रोकेंगे जरूर but nothing much of a trouble for Dubai Vipers. इस समय पे तो दुबई वाइपर्स को पता चल चुका है ये गेम अपने हाथ में है. सिंगल बना लो, डबल बना लो, डॉट छोड़ लो, गेम हमारे हाथ में आने वाला है. Definitely. Wickets needed. अक्षु आ चुके हैं. कप्तान साहब he needs to find a wicket. अपने जो lowest economy bowler थे, जो highest wicket taker थे सौरभ, he couldn't find anything. Yeah, he couldn't find anything. And at this point, even dot balls won't really save you, right? No. So you need to have 4 wickets. You need to pull off a neat over. Oh my God. I think इस पूरे GPL में ऐसे ही रहेगा. नीप का जो कॉफ है वो रहेगा. But making mistakes like this, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं विकेट्स चाहिए आप एक्स्ट्रास दे रहे. दुख, 9 runs. पीड़ा, कष्ट, क्रोध, निराशा. Panthers, I did not expect this, but इस बार चांस मिला है. डाइव मार के लेंगे. Roy is back to the dugout. Much needed wicket. रन जरूर कम है बनाने के लिए, but हार नहीं मान रही है Panthers यहाँ पे. They want to find a way to take down Vipers. That's the second wicket. मतलब यहाँ पे 2 down पे आए दूसरे खिलाड़ी. Can he make sure that the last 9 runs जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए, वहाँ पे गलती ना हो. Surely Harbhajan is up for the task. Even though he's an excellent bowler, उनकी बैटिंग इतना तो सपोर्ट कर ही सकती है टीम को कि 5 का रन रेट एक्वायर कर ले. मुकेश on the other hand, the captain for the team, उनका स्ट्राइक रेट जो अभी है जस्ट 200 से नीचे गिरता हुआ, he's still determined to continue on towards the end. वो ही ये गेम खत्म करना चाहते हैं, perhaps even in style. Full toss, great square cut. 2 रन निकाले जाएंगे इतने में.
पर फील्डिंग भी बहुत शार्प नजर आ रहा है पैंथर्स की तरफ से. फील्डर didn't even have, I mean, keeper didn't even have to get the hold of the ball. It directly hit the stumps. So चांस यहाँ पे ढूंढ जरूर है, but वो चांस वाइपर्स नहीं दे रहे. Again Yorker left coming through, just swept off. जाएगा सीधा स्क्वायर लेग की तरफ, डीप से भाग के आएंगे. And again a misfield. अभी मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा था आपकी फील्डिंग पे, and you make a mistake like this. Barely वो बाउंड्री को छूने के तरफ से होल्ड किया गया, उसको रोका गया, वरना तो चौका लग जाता यार. Exactly यार, I mean just 4 रन तो फिर भी भागे उनने. क्या फायदा इतना रोक के. अरे यार, so that was such a, I don't know, I have to take my words back, क्योंकि वो इतना शार्प फील्डिंग करने के बाद ऐसे एक बड़ा गलती करके भाग के 4 रन बनाने का मौका, undigestible. एंड अब चाहिए उनको सिर्फ 3 रन, उसमें से 2 अभी बना लेंगे. The scores will be equalized. And now Dubai Vipers just need one more to confirm this victory. That's all they need. However, bowler change overdone, आखिरी ओवर पे निश्चित होगा ये. 1 run required in 1 whole over. Yeah. You know, at one point मैं आजान का बहुत बड़ा फैन था उनकी bowling का. But now he has an impossible task on his hands. Imagine back-to-back 3 wickets without giving away anything. Oh my God, we just spoke about it. It's going to be a big shot, but umpire says no. He doesn't agree with it. And बच जाएंगे यहाँ पे हरभजन अपने पहली ही गेंद पे almost out होने वाले थे. And again, we've spoken about this. Harbhajan has not had a great time on the batting side of things. Yeah, but I'm sure he's capable of winning at least 1 run. Yes. And with that, he can be the finisher for the game. And they there it make goes. it across the wickets. यार यहाँ पे तो मिसफील्ड की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी हो गया. So that tells you the amount of persisting problems that exist on the side of Sydney Panthers. But for now, the Dubai Vipers will rejoice their victory, will find their own glory, and end up once again acquiring 2 points, which should propel them quite high up in the overall leaderboards of the global e-cricket Premier League. Back on track. थोड़ा deviate हो चुके थे, but with this victory they should be back on track. अगर Panthers आज जीत जाती, then the table would have opened up for everybody. तो अभी दुबई वाइपर्स मुश्किल जरूर कर चुके हैं. ये मुश्किल कितने होने वाले हैं हमारे एनालिस्ट जरूर ब्रेक डाउन करेंगे, बट उससे पहले जाएंगे एक ब्रेक की तरफ. Mania is here. Maniacs wanted. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. Pressure moment created at the end. 5 runs needed in 6 balls, but a slight misfield on that last ball. It was an easy win after that, right? So Dubai Vipers, congratulations once again. आ जाओ यार, क्यों बैठे हो? आ जाओ, आप भी आ जाओ. Please give a huge round of applause for this guy, Mukesh Rolwani, the captain, and of course Akshu. बहुत ही बढ़िया गेम था. एंड तक आपने टक्कर दी है, तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा, एंड में व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली कि आप शायद ये मैच जीत जाते उसके कारण? रन थोड़े कम थे इनके लिए. जिस तरीके से इनका गेम चल रहा है, सिंगल डबल करके. पर चलो रन को देख लेते कि हाँ चलो इतना ही रन्स बना पाए हो आप. ऑन दैट नोट ऑल्सो, बॉलिंग में आप क्या डिफरेंटली ट्राई कर सकते थे जिससे कि ये वो टारगेट अचीव ना कर पाते, वो हिट नहीं कर पाते इतना स्कोर? ट्राई कर रहे थे, थोड़ा बॉल दे रहे थे, थोड़ा लालच दे रहे थे इनको, बट 1-2 तो 6 मार भी दिए उस पर. मिसफील्ड्स हुए हैं, हमने देखा लास्ट बॉल पे मिसफील्ड था. अच्छा, डायरेक्ट मारने के लिए वो हुआ है. चलो ऑल द बेस्ट, कोई बात नहीं, अभी मैचेस बाकी है, सो डोंट फील डिसहार्टन यार, बहुत सारे मैचेस बाकी है. अब तो आदत सी है आपको ऐसे मैचेस जीतने में. हाँ हो गई आदत. क्या बोले? इस मैच से प्रेशर था अपनी टीम में, लिटरली प्रेशर था. वो दिख रहा था. लॉस रन यार प्रेशर था, बट विन के बाद ना एकदम काम है. अब हाई निकलता यार, चीयर नहीं करना चाहिए विन के बाद, तालियां नहीं होनी चाहिए. गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू दुबई वाइपर्स वंस अगेन. फैंटास्टिक गेम दोनों साइड के लिए चीयर्स थे जरूर. बट थोड़ा सा हम बातचीत कर लेंगे मैच के बारे में, हमारे एनालिस्ट बात करेंगे, हम नहीं करेंगे. वंस अगेन गाइस, प्लीज शेक हैंड्स.
There was a fantastic match, of course, and इस एक्शन को और भी 5 दिन आप एंजॉय कर पाएंगे जियो सिनेमा पे शार्प शाम के 5 बजे से एपिसोड्स आने चालू हो जाते हैं, तो आप जरूर जाके देखिए ये मैचेस जो आते रहेंगे एक के बाद एक दिन. आज है डे नंबर 6, so there's 5 more days of action left. But before we conclude the show, before we conclude for the day, I would love to throw the ball to the analyst जो post match के लिए तैयार है. Boys, over to you. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. Well, a comfortable victory there for the likes of the Dubai Vipers. Then eventually they're getting 3 wickets. A victory by 3 wickets. Pretty much, I think they just followed the routine, isn't it? Yeah, 27 time a team has won the toss and opted to bowl, and it has worked a majority of the times. Look, Dubai Vipers came into this game with a motive that they want to finish the day at the top. First team to get double points on the table. 10 points for Dubai Vipers. Of course, and that's how, of course, their batting scorecard looked like. Roy, again, phenomenal stuff, 21 for him in that start right away. Dubai did, I think they knew what they were doing with, isn't it? Yeah, and you know what? We had spoken about how Roy hasn't given them the best starts. He's not had the best tournament. सुन ली लगता है उन्होंने हमारी बात. 8 ball पे 21 run. That's the start they gave him. Manish, change in batting order for him. Flopped today for a change, but he's been very, very consistent. Mukesh, 28 of 14. Carried them. So Roy and Mukesh doing the job once again. 54 for 2. Quite a challenging total. Dicey total, not the easiest total. Well, of course, they lost an early wicket on the other side, but Mukesh and Roy building that solid foundation. We'll have a look at the Sydney Panthers side then. Pradyumna, well, I think expected more out of him, isn't it? Yeah, that was the big wicket. Vijay taking that wicket. 15 of 6 for Pradyumna, and once they got that wicket, look at that. Harbhajan taking that wicket off Saurabh. और Harbhajan के बारे में मैं आपको एक बता दूं, उनके चाचा जी, his uncle, is a big fan of off-spinner Harbhajan Singh, after whom he is named. Harbhajan Singh के ऊपर उनका नाम रखा गया है. So he took that wicket with a spin. But look, no real big scores for Sydney Panthers. They needed that one big score to chase that down. That didn't really come through. Well, it never looked like they could have actually gone beyond 45. But then again, good ending runs on the board. Azan did try to make some late runs out there. Dubai Vipers there, decent bowling performance. Yeah, absolutely. Manish again in the wickets. Couldn't do much with the bat today, but look at that. 1 for 4 from his 1 over. He has been a superb all-rounder. Harbhajan 1 for 12, Vijay 1 for 13. Those are the wicket takers. But taking those early wickets, 9, 19, that is where they really hurt Sydney. That is where they really won the game. On the other side, we'll have a look at that Dubai. In fact, we'll have a look at the Sydney Panthers bowling. Then they just got that one quick wicket, but nothing much out of the entire game. Yeah, and you know what? That is where, the game was lost really. What did Dubai do? They took the early wickets. What did Sydney not do? They did not get too many early wickets, and they allowed the batting to prosper. That's where the game was won and lost. Then again, leaking a lot of runs as well. You see for the likes of JP, again, not really getting wickets, but runs are pretty much leaking out for them. Not really too much of worry signs for them. I think they can just go back and, do a little bit of research, homework, and come back strong. Yeah, they were very dejected after that particular loss. They really believed that they could win that game, Sydney Panthers. Look, double figures there for Azan, for Pradyumna, for Akshu, but no one really going and making a difference, getting the starts, not finishing the game. Just getting a 20 odd, 25 odd could have changed things for Sydney. But Dubai did that, got the wickets, got the runs, got the 2 points. Well, Dubai really did well with the bowling especially. Restricting Sydney Panthers to a decent score out there. And there it is, of course, your man of the match then, Mukesh. That smile, well, I think he just has that constant smile always. Just a way of saying, look, कुछ भी हो जाए दुनिया में हमारा smile तो बरकरार रहेगा. बिल्कुल, and they're very cool customers, very calm customers. He's the captain as well, chief wicket taker, one of the leading run scorers. They have 2 brilliant all-rounders, Mukesh and Manish. If Manish doesn't win you the match, Mukesh will. Well, we are speaking about partnerships. Mukesh and Roy did build a solid partnership there right away. You can see it in between. Roy and Manish
not really the kind of starts that they would have liked. Yeah, Manish fell early today, but Roy kicked on, scored those runs, and then Mukesh and Roy getting that platform. Mukesh going on, finishing the game for his side. When I say finish, I mean finishing the overs in an agreeable manner, getting those runs, getting those 54 runs on the board. But look, partnerships throughout. And when you have those partnerships throughout, you get a decent total and you get a challenging total for the opposition. And for the Sydney side, they lost 2 quick wickets, remember, early. Pradyumna did try to, of course, do it, but not really successful there. Of course, 9 runs, disappointing in all means. Yeah, no big partnerships. Like I said, they needed that one big score. They needed that one big partnership. Didn't really come through. Brilliant bowling from Dubai. They won the day. Well, Dubai Vipers, then again, the movement starts from that point table perspective because you've seen that flow quite volatile at the end of the day. But again, Chetan, we're talking about these teams now kind of knowing each other's strengths and weaknesses, which makes them more vulnerable, isn't it? Yeah, 6 days competition is finished. 6 दिन का खेल खत्म हो चुका है. Round robin league stage में सिर्फ 5 दिन का खेल रह गया है और उसके बाद है grand finale. We've already started the second round of matches. By now, everybody knows everybody's strengths and weaknesses. This is going to get more intense. This is going to get more intriguing, and we are going to see a lot more action. Well, for the start, of course, we did see the hands trembling with all the nervousness that they had getting on the stage, playing out. We did see them wipe their hands with tissues time and again. But now that stage is over. You are on, you're building for a competition. Well, when you go that, there were a lot of 4s and 6s. Let's have a look at the 4s and 6s brought to you by Pulsar and S125 Showstopper. The 4s and 6s there. Dubai Vipers really would enjoy watching that again. We did have fall of wickets. Dubai Vipers did pretty well to get that all out for Sydney Panthers. We'll have a look at the wickets brought to you by Lenskart. Now, Dubai Vipers get the 2 points, which also means that there will be movement in that points table, Chetan. At the end of the day, Dubai Vipers will be content getting the 2 points. They go forward in that build-up to the qualifiers. They've done something unique. There is no team that has finished 2 consecutive days on the top of the points table. Yesterday, they did it because Kolkata lost and Mumbai lost. Today, they have done it because they have won that last game, got those points on the board. The first team to reach double digits. 10 points from 8 games for them. And look, there are 4 teams on 8 points.
3 teams on 6 points. From 1 to 8, there is only 4 points difference. We still have 5 more days action, and it's going to be really intense. They also see the fact that Chennai Wolves have played 9, which really makes things tough for them. It's just 6 points for them. Other teams, it's just 7 or 8. Chennai Wolves, do they really have a chance out here? Yeah, they do, because, look, tomorrow, day 7, we have 6 matches. A lot of teams will be playing double headers, so expect a lot of churning and changing on day 7. And you know what? The difference is just 4 points. So anything could really happen. They obviously need to win a few games to get in there. But look, anything can still happen. There it is, and some things are certainly happening here when it comes down to runs. We did have some personal barriers there. Bishwas 173, Tejas 159, and they're already crossing the 150-run mark, isn't it? Yeah, and look, there's nothing to choose from number 2 to number 5. Pradyumna just on the verge of 150. Manoj, Manish, Tejas, they've been brilliant for their teams. Manish, obviously, the standout with wickets as well. But Biswas is in a league of his own. Highest percentage of hitting sixes, highest percentage of hitting fours, and that reflects the way he's scoring runs. Kudos to him. Now, we have seen some batters doing some good bowling as well, because bowling has been very important from this perspective, because they're just playing 5 overs there. Mukesh there with that smile again. 10 wickets already, another personal landmark for him. Oh, absolutely. The first bowler to hit the milestone of 10 wickets. And look at that, Manish with 9 wickets to go with 150 runs. What a brilliant, brilliant performer. Mirdhaji, very good with the ball for Kolkata. They'll be depending on him. But again, nothing much to choose from. 10 to 8. Number 1 to number 5. Brilliant bowling performances from all of them. Well, when you come down halfway through to this tournament, you may be wondering, why is this 10 wickets being such a big deal? Remember, we are playing 5 overs, and in that, especially the 2 power plays, you play that there is no chance for a bowler whatsoever. And talk about that highest strike rate, then again, Kamal, you have the variety out there, isn't it? Yeah, PK and Wamsi. PK hasn't really kicked on. He opens the batting. Wamsi doesn't open the batting, comes lower down the order. But you have to look at Tejas and Kamal. They open the batting. They bat in the power play. 159, 113 runs, and then 252 and 251 strike rate. That's brilliant. Now, certainly from a perspective where you're talking about these batters hitting the ball at the right time, timing it well. Yes, the timing is one thing which is connects both real world cricket and also real cricket out here. We look at the best economy then from the bowler's perspective. Manish, of course, joins that bandwagon as well. You want to see the reason why Dubai are top of the table? Mukesh and Manish, 19 wickets, and each of them at an economy of under 10 and over. In a 5-over tournament, in a gaming platform tournament, in real cricket, under 10, 19 wickets. That's brilliant. That's brilliant, and that's the reason why Dubai are top of the table. Well, taking them to the top of the table, they'll be pretty delighted to know for a fact that now, at least, like you mentioned, there have been 2 days where they have been actually topping the table. All things happened. Kolkata Hawks were there, Mumbai were there, but Dubai Vipers, then now when it comes to, or when we are approaching that business end of the season, Dubai getting that all-important points. But still, we are far off from that qualifier. Still another few days of games left. For that, of course, we'll have to wait and watch for the next set of games. But for now, we are all done for the show today. Thank you so much, Chetan, for joining me along. Let's go down to our host for one final time. 6 दिन हो गए प्रिंस. Yes. आज 5 मैचेस भी देख लिए मैंने. इतना कुछ सीखा प्लेयर्स से. यार ये चौका कैसे मारते वो नहीं समझ में आ रहा. आपसे नहीं होगा. NH के नहीं होगा क्या? हो सकता है. देखिए ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, क्योंकि हमने इतने मैचेस देखे, राइट? इतना कुछ सीखा है. आप ऑल आउट हो चुके हो सर. कुछ नहीं कर सकते अभी, अब हार चुके हो, ठीक है. 2 बार मैंने हरा दिया आपको, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे यार, इतने मैचेस देखे हमने, बहुत मजा आया, राइट? लेकिन हमने जो सीखा है उसको हम गेम में नहीं कर पा रहे हैं बॉस. मेरे पास एक आइडिया है. देवेंद्र चल जाओ भाई. 1 मिनट आ जाओ भाई. आ जाओ तुमसे टिप्स लेने पड़ेंगे. इतना बढ़िया जो खेल रहे हो ना आप. ये बताओ इन भाई साहब को ना, सुबह से मैं सिखा रहा हूँ चौका कैसे मारना है, छक्का कैसे मारना है. आप जरा टिप्स दे दो. आप स्टार्टिंग में आप पहले सिंगल डबल करो, गैप ढूंढो. अच्छा पहले देख लो भी इधर बॉल आ रहा है, इधर आ रहा है, तो वहाँ पे लॉफ्टर शॉट के लिए ट्राई करो. हो तो कैच हो जा रहा है फिर. प्रैक्टिस करो ना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए भाई. ऐसे नहीं होगा, कुछ और दो तुम टिप्स. कोई चीट कोड है क्या? मेरे मैनेजर का मंत्र है. आपके मैनेजर का मंत्र? मैनेजर का मंत्र भी होता है? यस. देखो ये GEPL है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है? तो देखते क्या मंत्र लेके आते हैं. ओ भाई लीजिए. ये क्या है मंत्र है? देवेंद्र
ये मंत्र है। मंत्रा है। रुको तो, ये मंत्र है। हाँ भाई मंत्रा है मंत्रा। नहीं आ रहा है? आ रहा है मेरे अंदर। क्या? जीपीएल के प्लेयर्स की शक्तियां। एक मिनट, सिग्नल। यस यस यस, आ गया भाई, हमारे पास आ गया। मैं तो कल ये पहन के आ रहा हूँ भाई, मैं कल ये पहन के आ रहा हूँ। सेम डील, सेम डील, कल यही पहन के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। But on that note, of course, day number 6, it was superb, it was amazing. लेकिन अभी भी 5 दिनों का सफर बाकी है। इस सफर में कितने लोगों को सफर करना पड़े वही जानने के लिए हम जरूर जुड़ेंगे। बट उससे पहले आज के दिन का छोटा सा रिकैप मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमने शुरुआत किया एक बहुत अच्छे नोट पे। हम देख रहे थे जो टेबल के नीचे टीम्स थी वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है। चेन्नई कुड हैव एक्चुअली गॉन इनटू टॉप 3 अगर वो आज दिल्ली के अगेंस्ट मैच जीत जाते। बट क्योंकि दिल्ली जीती है, अभी दिल्ली का चांस बन जाता है कि वो ऊपर जाएंगे। यस, फर्स्ट टू 8 अभी भी ओपन है। एंड आज के मैचेस के बाद मोर और लेस सारे टीम्स एक ही इस पे है यार। ऐसा नहीं है कि कोई फेवरेट है या कोई। आई थिंक अगर चेन्नई 2 मैचेस जीत जाती है तो शायद वो भी टॉप 3 में आने का काफी पॉसिबिलिटीज है। अगेन कुछ टीम्स है जिनके सिर्फ 7 मैचेस हुए हैं, 8 नहीं हुए, तो उनके पास कल एक एडेड ऑन एडवांटेज रहेगा। एंड कल एक स्पेशल चीज भी है। क्या? कल 5 नहीं, कल 6 मैचेस है बस। मतलब और भी ज्यादा ड्रामा। यस, बट आज एक दिन में we saw 4 players from 4 different teams crossing 150 runs score. तो यार दिन में किया है, ठीक है, एक दिन में। That's a big round of applause. Amazing. क्या कर रहे हैं यहाँ के प्लेयर्स? ये प्लेयर्स ही कर सकते हैं। देखो हमसे एक्सपेक्टेशंस ये मत रखना, हम सीख वीक के कल आ जाएंगे। आज खेलते हैं, ठीक है? देखो हमसे ड्रामा करवा लो। हाँ वो कर लेंगे। और वो अभिषेक से करवा लो। नाच भी लेंगे, ठीक है? ये नाच करो, गाना कर लो, हमसे गेम मत खिलाओ यार। With that being said, we end day 6 on a very high note. लेकिन जाने से पहले we would of course like to thank all our sponsors. Title sponsors: JetSynthesys, official partner Lenskart, Bajaj Pulsar NS 125, Dhruv Global School, Phenolics Pipe, Fleetguard, Filtrum. Flipkart, along with that, Zebronics, AMD, Gigabyte, and LG Ultra Gear are also our official partners. उनके साथ साथ हम जरूर नहीं भूलना चाहेंगे our strategic partners. That's going to be Real Cricket 24, Sky Esports, and Global Music Junction. Our broadcast partner, Sports 18, and our streaming partner, Jio Cinema. Speaking of which, दोस्तों आप हमसे मिल सकते हैं on Jio Cinema. But do not forget to watch in all the new episodes dropping in at 5 p.m. This is GPL and the game is on! All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता, खुद के तेरे हाथ में तूने रखा चमचा। पूरा गैंग है ग्राइमी, टॉप टॉप टॉप, सीधा शॉट शॉट्स तेरे ब्रेन में। बॉम्बे दा बैड मुंडा, पंजाब तक कैंट में। नाम है डिवाइन पर बंदा नहीं हुसैन में। रिक्शा से निकला रोवर मेरे रेंज में। बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज पे। तू सड़क के महारानी के बेस में, मैं संजू बाबा वॉक करता हाथ रख के जेब में। देख ले खलनायक में और गुस्से वाला, फ्रैक्चर तेरा गैंग और मैं एम्बुलेंस में पहुंचने वाला। ना आज कोई है न कल कोई है, तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं। ना आज कोई है न कल कोई है, तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन नहीं From the bottom and we winning. Sunday ain't no competition नहीं. We came from the bottom and we winning. There ain't no competition. कोई नहीं मुकाबला. From the bottom निकला टॉप, डाला पैसा तो मुनाफा, माँ पे गाली सीधा लाफा। और रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे धाका मैं। 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ धाबे पे। स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स, अब पूरा कामयाब मैं। कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप में। हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में। हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में। हा 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 हा, भाई तू है वीक और
और मैं लेता हफ्ता खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा पूरा गैंग है ग्राइमी हा टॉप सीधा शॉट्स तेरे ब्रेन में बॉम्बे दा बैड मुंडा पंजाब तक कैंट में नाम है डिवाइन पर बंदा नहीं हुसैन में रिक्शा से निकला रोवर मेरे रेंज में बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज पे तू सड़क के महारानी के बेस में मैं संजू बाबा वॉक करता हाथ रख के जेब में देख ले खलनायक में और गुस्से वाला फ्रैक्चर तेरा गैंग और मैं एम्बुलेंस में पहुंचने वाला ना आज कोई है न कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं ना आज कोई है न कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं competition नहीं came from the bottom and we winning Sunday in the competition नहीं we came from the bottom and we winning there ain't no competition कोई नहीं मुकाबला from the bottom निकला टॉप डाला पैसा तो मुनाफा माँ पे गाली सीधा लाफा रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे थाका मैं 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ धाबे पे स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स पूरा कामयाब मैं कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में हा भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा पूरा गैंग है ग्राइमी हा टॉप सीधा शॉट्स तेरे ब्रेन में बॉम्बे दा बैड मुंडा पंजाब तक कैंट में नाम है डिवाइन पर बंदा नहीं हुसैन में रिक्शा से निकला रोवर मेरे रेंज में बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज पे तू सड़क के महारानी के बेस में मैं संजू बाबा वॉक करता हाथ रख के जेब में देख ले खलनायक में और गुस्से वाला फ्रैक्चर तेरा गैंग और मैं एम्बुलेंस में पहुंचने वाला ना आज कोई है न कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं ना आज कोई है न कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं came from the bottom and we winning Sunday in the competition नहीं we came from the bottom and we winning there ain't no competition कोई नहीं मुकाबला from the bottom निकला टॉप डाला पैसा तो मुनाफा माँ पे गाली सीधा लाफा रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे थाका मैं 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ धाबे पे स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स पूरा कामयाब मैं कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में हा भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा पूरा गैंग है ग्राइमी हा टॉप सीधा शॉट्स तेरे ब्रेन में बॉम्बे दा बैड मुंडा पंजाब तक कैंट में नाम है डिवाइन पर बंदा नहीं हुसैन में रिक्शा से निकला रोवर मेरे रेंज में बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज पे तू सड़क के महारानी के बेस में मैं संजू बाबा वॉक करता हाथ रख के जेब में देख ले खलनायक में और गुस्से वाला फ्रैक्चर तेरा गैंग और मैं एम्बुलेंस में पहुंचने वाला ना आज कोई है न कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं ना आज कोई है न कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं came from the bottom and we winning Sunday in the competition नहीं we came from the bottom and we winning there ain't no competition कोई नहीं मुकाबला from the bottom निकला टॉप डाला पैसा तो मुनाफा माँ पे गाली सीधा लाफा रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे थाका मैं 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ धाबे पे स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स पूरा कामयाब मैं कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में हा भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा पूरा गैंग है ग्राइमी हा टॉप सीधा शॉट्स तेरे ब्रेन में बॉम्बे दा बैड मुंडा पंजाब तक कैंट में नाम है डिवाइन पर बंदा नहीं हुसैन में रिक्शा से निकला रोवर मेरे रेंज में बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज पे तू सड़क के महारानी के बेस में मैं संजू बाबा वॉक करता हाथ रख के जेब में देख ले खलनायक में और गुस्से वाला फ्रैक्चर तेरा गैंग और मैं एम्बुलेंस में पहुंचने वाला ना आज कोई है न कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं ना आज कोई है न कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं came from the bottom and we winning Sunday in the competition नहीं we came from the bottom and we winning there ain't no competition
competition, कोई नहीं मुकाबला. From the bottom निकला टॉप डाला पैसा तो मुनाफा, माँ पे गाली सीधा लाफा. रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे धाका मैं. 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ ढाबे पे. स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स पूरा कामयाब मैं. कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं. हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में. हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में. हा 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 भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता. खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा. पूरा गैंग है ग्राइमी हा टॉप 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 सीधा शॉट शॉट्स तेरे ब्रेन में. बॉम्बे द बैड मुंडा पंजाब तक कैंट में. नाम है डिवाइन पर बंदा नहीं हुसैन में. रिक्शा से निकला अब रोवर मेरे रेंज में. तैयार हो दुनिया के सबसे बड़े ई क्रिकेट गेम रियल क्रिकेट 24 के लिए. JetSynthesys presents Global E-Cricket Premier League. Excellent piece of fielding. Oh, he's launched this superbly. देखो 8 जाबाज टीम्स को फाइटिंग फॉर ग्लोरी एंड 2.51 करोड़. जब रगों में दौड़े क्रिकेट का जोश और दिल में हो लव ऑफ esports. With real cricket, India gives e-cricket to the world. बुला रहा है जीत का डिजिटल मैदान. Let's go! Catch the action on Jio Cinema.